हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई एम अतिकुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाला हूँ लेग का एक्सरसाइज। ये बिगिनर एंड इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट पुश वर्कआउट एंड पुल वर्कआउट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसे चेक कर सकते हैं आई बटन में जाके। एंड अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब डाउन बिलो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं फ्यूचर में इस टाइप का जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी देयर, क्योंकि दिन में मैं क्या क्या करता हूँ वो सारे स्टोरीज में इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो हर वर्कआउट के पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमें कोई भी इंजरी ना हो। मैं लेग वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ कप मसल्स के साथ, बिकॉज ये मेरा वीक बॉडी पार्ट है। और जब मैं क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग वर्कआउट खत्म हो जाने के बाद काफ ट्रेन करता हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता है। और मैं काफ्स स्टार्ट करता हूँ स्मिथ मशीन काफ राइजेस के साथ। ये मैं करता हूँ टोटल 4 सेट्स। पहला जो सेट होता है वो होता है वार्म अप, और लास्ट 3 जो सेट होता है वो होता है वर्किंग सेट। और मेरा काफ्स का सेकंड एक्सरसाइज होता है काफ प्रेस लेग प्रेस मशीन में। ये भी मैं करता हूँ 4 सेट्स। पहला जो सेट होता है वो होता है वार्म अप, और लास्ट का जो 3 सेट होता है वो होता है वर्किंग सेट। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को पूरा कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच में फोकस करना है, तभी हमारा जो काफ्स मसल है वो अच्छे से स्टिमुलेट होगा। और वो ख़त्म हो जाने के बाद हम क्वाड्स के लिए पहला एक्सरसाइज करेंगे स्क्वाट, और ये भी हम करेंगे टोटल 4 सेट्स। पहला सेट होगा वार्म अप, और लास्ट का जो 3 सेट होगा वो होगा वर्किंग सेट। और इसमें हम थोड़ा हैवी जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग लेग्स ग्रो करना चाहते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लेग्स को ग्रो करने के लिए। और हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा लेग प्रेस, और इसे हम करेंगे टोटल 3 सेट्स मैक्सिमम वेट्स के साथ। लेग प्रेस मेनली फोकस करता है क्वाड्स को, और इसका सेकेंडरी मसल होता है हैमस्ट्रिंग। हमारे इस जिम पे लेग प्रेस का जो ट्रेडिशनल मशीन होता है वो नहीं है, इसीलिए मैं इस मशीन पे ट्रेन कर रहा हूँ। और हमारा लेग का नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा लेग एक्सटेंशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर आप लोग जो क्वाड में स्वीप देखते हैं उसे ग्रो करना चाहते हैं। और इसे हम करेंगे टोटल 4 सेट्स, और इस एक्सरसाइज को हमें पूरा कंट्रोल वे में करना होगा और मेनली फोकस करना होगा हमारे क्वाड्स पे।
और ये होगा हमारा क्वाड्स का लास्ट एक्सरसाइज। और इसके बाद हम जंप करेंगे हैमस्ट्रिंग पे। तो हमारा हैमस्ट्रिंग का फर्स्ट एक्सरसाइज होगा सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल, और इसे हम करेंगे टोटल 4 सेट्स। ये एक मेनली आइसोलेशन एक्सरसाइज है और ये मेनली टारगेट करता है हमारा हैमस्ट्रिंग पे। और इस एक्सरसाइज में हमें लेग को पूरा नीचे तक ले जाके कॉन्ट्रैक्ट करना है और ऊपर आके पूरी तरह से स्ट्रेच, तभी हमारा हैमस्ट्रिंग का जो मसल है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा। और हमारा लेग वर्कआउट का लास्ट एक्सरसाइज होगा स्टिप लेग डेडलिफ्ट, और इसे हम करेंगे टोटल 3 सेट्स में। और ये एक्सरसाइज मेनली फोकस करता है हमारा हैमस्ट्रिंग पे और ग्लूट्स पे। आप लोग जो भी मसल का वर्कआउट करते हैं, आप लोगों का पूरी फोकस उस मसल पे होना चाहिए, तभी आप लोगों का मसल अच्छे से ग्रो हो पाएगा। और इतना ही था ये लेग एक्सरसाइज के वीडियो पे। अगर आप लोग एक बिगिनर है या फिर है एक इंटरमीडिएट, आप लोग इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों को कैसा बम्प मिला है। अच्छे वर्कआउट के साथ जब आप लोग एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करेंगे, तभी आप लोगों का एक अच्छा मसल गेन मिल पाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।